everyone, welcome to our channel. Knowledge of friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज की अगर हम क्लास की बात करते हैं तो हम रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं, जो कि रीजनिंग की क्लास आपकी अरिथमेटिकल रीजनिंग है. एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ अरिथमेटिकल रीजनिंग, दैट्स फॉर श्योर. एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. एंड अगर रीजनिंग की बात करते हैं तो ये आपका जो क्लास है दैट इज़ योर क्लास 144. ऑलरेडी अपने 143 क्लासेस कर लिया है. एंड जिसमें हमने सबसे पहले जो डिस्कस किया है वो हमने एनालॉजी डिस्कस किया है. उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन किया है. देन वी हैड डन सीरीज कंप्लीशन. देन वी हैड डन कोडिंग डिकोडिंग. देन ब्लड रिलेशन. वी हैड डन योर sequential output tracing, logical Venn diagram, direction sense test. Then we had done alphabet test, parcel test, and then we had done about that is logical sequence of words. We had done number ranking and time sequence test. And we had done multiple mathematical operation. And now we are doing arithmetical reasoning. This will be the 14th topic. So let's go ahead. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. And this is your 14th topic here. एंड आज भी जो हम डिस्कस करेंगे वो अर्थमेटिकल रीजनिंग करेंगे. अर्थमेटिक रीजनिंग में भी हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस लास्ट क्लास 143 क्लासेस से कर चुके हैं. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, सो आई विल वांट टू टेल यू कि मैंने बेसिक्स ऑलरेडी जो मैं क्लास जो टॉपिक स्टार्ट करती हूँ उसका जो फर्स्ट क्लास होता है उसमें मैं आपको बेसिक्स करा देती हूँ. अगर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 के केसेस में भी अगर हम बात करते हैं तो इस ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 एंड टाइप 4 सब एक ही क्लास में बताया, क्योंकि वो उसके रेफरेंस में ही आगे क्वेश्चंस आए हैं. ओके, बट ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर टॉपिक, जो कि अभी तक के हमने 13 टॉपिक्स किए हैं अदर देन दिस, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको जैसे जैसे मैंने टॉपिक्स कराए उसके हिसाब से ही क्वेश्चंस कराए. फिर नेक्स्ट टॉपिक है, देन फिर है, तो उसके लिए आप बेसिक्स आप फर्स्ट क्लास जो भी इसका होगा वो आप देख सकते हो. एंड अगर आपने अभी हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो. एंड एज वेल एज आप प्लीज़ प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियो सारे टॉपिक जितने मैं टॉपिक्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ 13 टॉपिक्स मैं कवर अप कंप्लीट ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ईजी से लेकर डिफिकल्ट पैटर्न तक की. एज वेल एज आज जो अरिथमेटिक रीजनिंग कराऊंगी जो कि 14th टॉपिक है, होपफुली विल कंप्लीट इन दिस क्लास ऑल्सो. सो अरिथमेटिक रीजनिंग ऑलरेडी आपके 14 टॉपिक कवर अप हो चुके होंगे. नाउ स्टार्टिंग विद द 51th क्वेश्चन ऑफ द सेशन. द क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टूड, व्हेन राहुल वाज बोर्न, जब राहुल पैदा हुए, हिज फादर वाज 32 इयर्स ओल्डर देन हिज ब्रदर. उनके जो पापा हैं वो 32 इयर्स जो है वो ज़्यादा बड़े थे उनके भाई से. एंड हिज मदर वाज 25 इयर्स ओल्डर देन हिज सिस्टर. और उनकी मम्मा जो थी वो 25 इयर्स ओल्ड थी उनकी बहन से. इफ राहुल्स ब्रदर इज 6 इयर्स ओल्डर देन हिम and his mother is 3 years younger and then his father, how old was Rahul's sister when he was born. So basically आपको बताना है कि जब राहुल पैदा हुए थे तब क्या हुआ था. उनके पापा की जो एज थी वो तो 32 इयर्स ओल्डर थे अपने भाई, इनके खुद के भाई से, और जो मदर्स थी वो 25 इयर्स ओल्डर थी उनकी सिस्टर से. राहुल के जो ब्रदर हैं वो 6 इयर्स ओल्डर हैं देन हिम. एंड ऑफ कोर्स वो उन राहुल से 6 साल बड़े हैं. एंड उनकी जो मदर है वो 3 इयर्स यंगर है उनसे, अपने पापा से मदर जो है 3 इयर्स यंगर है, 3 इयर्स छोटी है. हाउ ओल्ड वॉज राहुल सिस्टर व्हेन शी वॉज बोर्न. जब राहुल पैदा हुए तो उनकी बहन कितने साल की थी, आपको ये बताना है. ओके, सो दिस क्वेश्चन बात करती हूँ तो ये क्वेश्चन जो है वो होटल मैनेजमेंट के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है. एंड दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर अमंग द कॉम्पिटिशन वाइज. So the options we have is 10 years, 12 years and 15 years here. So when Rahul was born, जब राहुल पैदा हुए तब क्या हुआ कि उनके जो ब्रदर्स की एज थी, लेट्स गो अहेड, ब्रदर्स की भी एज दी हुई है. तो ब्रदर्स एज जो है वो उनकी उस टाइम पे 6 साल की थी, ठीक है, क्योंकि 6 साल का डिफरेंस है. तो जब वो पैदा हुए तो 6 साल बाद पैदा हुए, ऑब्वियस सी बात है. उनके जो फादर्स थे, ओके, उनके जो फादर थे तो वो उनकी एज जो थी वो 6 + 32 ईयर्स, तो वो आपके 38 ईयर्स के हो गए. और उनकी जो मदर थी वो आपकी 38 - 3, 38 - 3 क्यों, क्योंकि 3 साल डिफरेंसेस था. तो 38 - 3 दैट मीन्स 35 की हो गई. और अगर मैं उनकी सिस्टर्स की एज की बात करती हूँ तो सिस्टर्स एज में 35 - 25
35 minus 25, then that will be included as 10 years. तो हमारे पास जो सिस्टर्स की उस टाइम पे जो एज थी वो 10 years थी. So option 10 years, 12 years and 15 years, that is option A will be the right answer, that is 10 years. क्योंकि when Rahul was born, his brother's age is 6 years and his father age is x plus 32, that is your 38 years, and his mother's age is 38 minus 3, क्योंकि 38 उनके पापा की उम्र थी और वो 3 साल उनसे छोटी थी, तो इसलिए 38 माइनस 3 उनकी मदर्स की एज 35 आ गई. अब लेट इज सिस्टर्स एज, तो 35 उनकी मदर्स की एज थी और मदर्स की एज से वो कितने 25 साल छोटे थे, तो 38 माइनस 25 दैट विल बी द 10 years old. ओके, सो उनकी सिस्टर की जो एज थी वो आपके 10 years की थी, एंड दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हियर फॉर दिस क्वेश्चन. Now moving ahead, we have another question, and that is your question number 52th question of the session that we have to discuss here is. So the next question is 52th question. The question we have is, in a town, एक टाउन में 65% people watch the news on television. तो एक टाउन में 65% जो people है वो आपके न्यूज़ जो है वो टेलीविजन में देखते हैं. 40% जो है वो that reads a newspaper, जो ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. 25% read a newspaper and watch the news on the television. उसमें से आपके जो 25% है वो न्यूज़पेपर्स में भी रीड करते हैं, उसके साथ साथ वो टेलीविज़न में भी न्यूज़ देखते हैं. And also, what percent of the people neither watch the news on the television nor read the newspaper? Okay. According to the condition what they had given you in the this question here, so what they had told you, एक टाउन है जिसमें 65% जो लोग हैं वो आपके न्यूज़ को टेलीविजन में देखते हैं. 40% जो लोग हैं वो आपके दैट दे रीड ओनली न्यूज़पेपर, और 25% ऐसे लोग हैं जो कि न्यूज़पेपर और टीवी भी में देखते हैं न्यूज़. तो अब आपको बताना है कि क्या परसेंट होगा जो कि पीपल ऐसे हैं जो कि ना ही आपके न्यूज़ टेलीविजन में देखते हैं और ना ही आपका न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं. ओके, सो द ऑप्शंस वी हैव इज 10, 20 and 30. According to the question here, the total numbers of the people be 100. Let कि हम उन लोगों को कैसे समझ लें कि वो 100 लोग हैं, क्योंकि हमको कुछ इन्होंने बताया नहीं है. Okay, according to the 100, if we are letting the total number of the people be 100, so let's we just make a diagram here, so that to represent the one diagram, so that you will be also cleared about what we want to say here. This will be the one Venn diagram. This is an intersection circle. ये x है. This will be the y here. This will be the A, जो सिर्फ ये देखते हो. B, जो दोनों देख रहे हो, न्यूज़पेपर और टेलीविजन दोनों. और C, जो सिर्फ एक लेख देख रहे हो. With respect to this, if let the circle, ये x जो है that will be presenting that who watched, जो कि टेलीविजन से देखते हैं, तो टीवी वाला. And the y represent the people who read the newspaper. Okay, that they are newspaper वाले, ये y वाले. और ये जो इंटरसेक्शन पार्ट है ये वो है जो दोनों देखते हैं. ठीक है. With the conclusion of this, that who reads the newspaper and who watch the television, so in the case of this, what they had reminded you कि a plus b मतलब a plus b that is equals to 65%. ठीक. a plus b that means that who watch the news in the televisions, a plus b. ठीक है, ये आपके टेलीविजन वाले हो गए ये, क्योंकि एक्स टेलीविजन को शो कर है a plus b वाले को. आप फॉर द नेक्स्ट कंडीशन वी कैन से दैट बी प्लस सी, ये बी और ये प्लस सी, ये कौन से वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं. तो न्यूज़पेपर वाले मतलब बी प्लस सी जो है वो 40% हो गया. और बी जो अकेला है जो सिर्फ दोनों देखता है वो क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 25. ठीक. इस वेन डायग्राम से हम सारी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं. तो फिर 6C कितना हुआ, B जब 25 है तो ये कितना हुआ और ये टोटल कितना था. तो B प्लस सी देखते हैं, B प्लस सी कितना है, 40 है. B प्लस सी 40 है. अगर मैं यहाँ पे ये 25 रख दूंगी तो 25 वैल्यू रखने पे तो ये भी इधर आएगा, माइनस हो जाएगा. तो 40 में 25 गया, कितना बचा, दैट इज 15. तो C कितना हो गया, ये C जो है वो कितना हो गया, तो C हो गया 15. अब C मिल गया मुझे, B मिल गया, इधर से भी निकाल सकते हैं A प्लस बी वाले में से. अब A हमें सिर्फ निकालना है. अकॉर्डिंग टू दिस, नंबर ऑफ द पर्सन हु नीदर वॉच द टेलीविजन एंड नॉट रीड द न्यूज़पेपर, व्हाट वी कैन डू सर, टोटल नंबर ऑफ पीपल 100 थे. हमने A प्लस B प्लस C तीनों को प्लस कर लिया. सो व्हाट विल फाउंड 100 माइनस A प्लस B प्लस C, माइनस प्लस करो पहले 40, 25 और प्लस 15.
तो 15 प्लस 25, दिस इज 25, 25 एंड दिस 40. ओके, तो इन सबको हम प्लस करेंगे. सो व्हाट विल फाइंड इट आउट, 40 प्लस 25, दैट विल बी 65. 65 प्लस 15, दैट विल बी 80 हियर. तो 100 माइनस 80 कितना होगा, 100 माइनस 80 इक्वल्स टू 20. तो कितने लोग ऐसे हैं जो कि दैट द परसेंट ऑफ द पीपल हु नीदर वॉच द न्यूज़ on the television, not read the newspaper as well, and those were the people, and that is 20 here. So the options will be 10, 20 and 30. That is option B will be the right answer, that is 20 here. Okay, so according to that you have to perform a question and then you can solve the question here. Moving ahead, we have another question, and that is your question number 53rd question of the session here, and that what we have to discuss here is, इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, 15 लोग का ग्रुप है. 7 रीड्स फ्रेंच, जिनमें से 7 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं. 8 रीड इंग्लिश, 8 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं. वाइल 3 ऑफ रीड नन, तो 3 लोग ऐसे हैं जो ना ही फ्रेंच पढ़ते हैं ना इंग्लिश पढ़ते हैं. ऑफ दीज टू, हाउ मेनी ऑफ देम रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ. अब कितने लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ते हो. तो बोला गया है टोटल एक ग्रुप में 15 लोग हैं, जिसमें से 7 आपके फ्रेंच पढ़ते हैं और 8 आपके इंग्लिश पढ़ते हैं. ओके, बट उसमें से 3 ऐसे हैं जो कोई भी नहीं पढ़ते. तो आपको बताना है कि कितने हैं जो दोनों ही पढ़ते हो. ठीक है, ओके, उसमें कॉमन तो होंगे ही, तभी तो 3 नहीं पढ़ते हैं. तो हाउ मेनी ऑफ देम रीड फ्रेंच एंड इंग्लिश बोथ, जो दोनों पढ़ते हो. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इनकम टैक्स और सेंट्रल एक्सरसाइज के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया. दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पेपर. If I'm talking about the competition wise, the option A is 1, B is 2 and C is 3 here. So according to the question here with respect to the following, that इसके लिए तो 20% निकल आया. And for this sake, let this will just draw a Venn diagram here, so that you will be get the answer in an easy way and you can be cleared with this. Okay, so this will be the E here, sorry, this will be the EF and this will be the E here, and ये है P, ये है Q और ये है R, जिसमें 3 लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते कुछ भी दोनों में से. ठीक है, so let the F will be the French and E will be the English for the people who read French and English respectively here. F वाले फ्रेंच है और E वाले इंग्लिश है, तो रिस्पेक्टिवली उन्हीं के रिस्पेक्ट में. सो पी क्यू बी की अगर मैं बात करती हूँ, हियर वी एम टॉकिंग अबाउट P प्लस Q प्लस R. ओके, तो इनमें से 3 और जोड़ लो जो कि कोई भी नहीं पढ़ते, तो ये 15 हो गए. तो उसके हिसाब से अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगी तो व्हाट विल गेट, ये 3 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में जाएगा, तो 12, 15 माइनस 3 दैट इज 12. तो P प्लस Q प्लस R हम ये कह सकते हैं 3 है, और दैट विल बी द 12 है, क्योंकि जो 3 नहीं थे वो हमने हटा दिए, 12 हो गए. अब इस इक्वेशन से अगर मैं फाइंड आउट करूँगी आंसर, तो हमें पता है P प्लस Q क्या है, 7 है. P प्लस Q क्या है, 7, दैट इज योर द फ्रेंच वन है. सो P प्लस Q, क्योंकि जो यहाँ पे P और प्लस Q जो है वो 7 है, सो वी कैन जस्ट से दैट कि P प्लस Q जो है वो 7 है. अकॉर्डिंग टू दैट Q प्लस R जो है वो 8 है, Q प्लस R जो है वो 8 है. ओके, with respect to that we got then equation that will be P plus 2Q plus R equals to 15, and from this equation we will get Q equals to 3 here. So the number of people who read French and English both, that were the 3 here, and those people that are known as 3 here, and that will be 3. सो here with respect to that Q, क्योंकि 3 हमारा आया है तो उसके हिसाब से जो Q होगा, that number of people who read French and English both, that will be the 3. Option A is 1, B is 2 and C is 3. That is option C will be the right answer, that is 3 here. Now moving ahead with another question, and the question we have is your 54th question of the session here. The question is, there are 50 students, जहाँ पे 50 students हैं, admitted to a nursery class, जिन्होंने nursery class में admission लिया है. Some students can speak only English and some can only speak only Hindi. तो इसमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं. 10 student can speak both English and Hindi. उसमें से 10 students ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बोल लेते हैं. If the number of the students who can speak English is 12, अगर जो total number of students जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं वो अगर 21 है, how many students can speak in Hindi, how many can speak only Hindi, and how many can, according to the question,
दैट स्पीक इंग्लिश हियर। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये आईएएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, एंड दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट पेपर अमंग द कंपटीशन वाइज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट options. We have 39, 29, 11 respectively, 37, 27, 13 respectively, 28, 18 and 22 respectively, and 21, 11 and 29 respectively. According to the question, let the we just make a diagram here so that you will be clear with this. And एक ये diagram ऐसा intersection वाला बनेगा जो कि ये है आपका x, ये है y और ये है z। z वाला ये वाला हिंदी ले रहे हैं, ये वाला इंग्लिश ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ई और एच रिस्पेक्टिवली स्टूडेंट को शो कर रहा है कि दैट हु कैन स्पीक इंग्लिश एंड हु कैन स्पीक हिंदी एज वेल। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक बोथ द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज दैट विल बी represented by, and that only will be have is 10 here. Okay, and the number of the student who can speak English and Hindi, so we can say that x plus y equals to 21 here. And with respect regard of this question, x plus y 21, so where the total number of the student will be x plus y equals to 21 है, तो total number of equation जो होगी x प्लस y प्लस z जो है वो आपका 50 है, जो कि उन्होंने total number of student बताया है। The number of students who can speak only English, so we can write it down the equation here, and that will be x equals to x plus y, and that is minus y, that is 21 minus 10. What we will get here is 11. A number of student that can who can speak only Hindi, and that will be the equation or we will get here is z equals to x plus y plus z, and then minus x plus y here. So उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो 50 minus 21, and that what we will get here is 29. तो एक मिल गया हमको, 11 मिल गया, सॉरी 11 मिल गया, एक हमें 21 मिल गया। थर्ड विल बी दोज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, एंड दैट विल बी y plus z, and y plus z equals to 10, that is plus 29, and that what we will get is your 39। तो हमारा होगा एक होगा 11, एक होगा 29 और 21 और एक होगा 39, तो दैट विल बी द आंसर हियर। So let's go ahead with the option 39, 29, 11, 39, 29 and 11. Yes, of course, this will be the right answer here for this question, and that is option A will be the right answer here, and that will be 39, 29 and 11 respectively here. Now moving ahead, we have another question, and that is the question number 55th question of the session. The question is, consider the Venn diagram given below. अभी तक हम बनाते जा रहे थे डायग्राम, बट अब इन्होंने खुद ही बना के दे दिया है। ओके, सो ये आपका जो आईएएस के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसके डायग्राम की बात करती हूँ तो यहाँ पे एक पेपर 1 को शो कर रहा है जिसमें 3, 12, 2, 8 है। पेपर 2 जो है दैट इज 12, 11, 2 and 5। पेपर 3 जो है वो है 3, 8, 2, 5 and 6। दिस विल बी द पेपर 3। इन ऑल कॉम्बिनेशन पेपर 1 और पेपर 2 का कॉम्बिनेशन बोलते हैं तो दैट इज सिमिलर इज 12 and 2। अगर पेपर 2 और पेपर 3 का कॉम्बिनेशन 2 and 5 इज कॉमन, और अगर पेपर 1 और पेपर 3 की बात करते हैं देन 2 and 8 विल बी द कॉमन। Let's go ahead with the question here. The number in a Venn diagram indicate the number of a person reading the newspaper. ये आपका रीडिंग जो रीड करते हैं न्यूज़पेपर उसके ऊपर डिपेंड करता है। द डायग्राम इज गिवन आफ्टर सर्वेइंग 50%। 50 लोगों का सर्वे लेके उन्होंने ये आपका एक डायग्राम बनाया है। अकॉर्डिंग टू इन अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000, 10,000 लोगों की बात करें अगर, हाउ मेनी कैन एक्सपेक्टेड टू रीड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर, और कितने लोग एक्सपेक्टेड होंगे कि वो 2 न्यूज़पेपर को रीड करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिगर हियर। ओके, so the possibility we have to find it out with for the two newspaper, and that is after surveying the 50 persons here, and they are the population that will be 10,000. According to that, the options we have is 500, 5,000, 5,000, 5,400 and 6,000 here. And this has been important question because this has been asked in the IS question paper as well. So we go ahead and just number of persons who read at least 2 newspaper is, 2 newspaper जो पढ़ते हैं वो क्या possibilities है, 12 है, 8 है, and then 5, and of course this is 2. So what we will do here is we will sum it out all, and that will be 12 plus 8 plus 5 plus 2. इनको ऐड करेंगे, 12 plus 8 that is 20, 20 plus 5 25, 25 plus 2 that is 27. So what we'll get is 27 here, 27. अब number of such persons that per thousand पे वो कितने persons हो गए तो वो हमें निकालना है, and that will be here as we will divide, we will find it out the solution. So that will 27 upon 50 total number पर उस पे लिया है,
or this will be the 10,000 here. Sorry, this will be 10,000 here. So 10 will cancel out with 10. 5 ones are 5 and 5 twos are 10, and then 20, and this will be the 200 here, and 200 multiply 27. 27 twos are 54, so what will get 5400? 5400. Answer would be 5400 will be the right answer. Options 5000, 5400 and 6000, and that will be the B option. That will be the 5400 will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have another question, and that is your question number 56th question of the session here, and that will be, out of the total of 120 musicians, जिसमें 120 musicians in a cloth, 5% can play all the three instruments. 5% ऐसे लोग हैं जो कि तीनों आपके इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं, जो कि गिटार है, वायलिन है और फ्लूट है. It is so happen that the number of musicians who can play any two and only two in the above instrument is 30. The number of musicians who can play guitar along is 40. What is the total number of those who can play violin alone or flute alone? आपको बताना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपके वायलिन को अलग से और फ्लूट को अलग से बना लेते हैं. इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन द IAS क्वेश्चन पेपर, and that is also an important paper if I'm talking about in terms of the competition here. With respect to that, we will move further and we'll find out the solution here. According to that, we have an option here, that is 55, 33 and 44. With respect to this, we'll just go ahead and that let the circles, draw a diagram here, that what they had drawn, we will just do that. Okay, and this will be the P, this will be the Q, and this will be the R, of course, that represent the musicians who plays guitar, violin and flute here. With respect to this, this is A, this is D, this is G, this is E, and this is C, this is B here. Okay, so now A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus, that is equals to 1 or 20 here. So A plus B plus C plus D plus E equals to 120. Number of musicians who can play all the three instrument would be, and that is, जो तीनों ही पढ़ सकते हैं वो आपके 5% लोग हैं जो कि आपके तीनों पढ़ रहे हैं. तो 5% of 120 अगर हम निकालेंगे 5/100 कैंसिल होगा, and that to 6, so we will get 6 here. Number of musicians who can play at any two and only two of the instrument, that will be the D plus E plus F, and that will equals to 30 here. जो कि D आपके D है, E है और F है. ये जो दो या दो से ज़्यादा, दो या सिर्फ ही दो बजा सकते हैं, वो D E F. G नहीं होगा, G क्योंकि तीनों कर लेगा, एंड दैट्स द रीज़न G इक्वल्स टू 5% हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है. ओके, तो 30 हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले गिटार ओनली, जो नंबर ऑफ म्यूजिशियन सिर्फ जो गिटार ही बजा पाते हैं वो A है, and that is A equals to what they had given you as 40. Now the number of musicians who can play guitar only, that is A equals to 40, and number of musicians who can play violin alone or flute alone, that will be your B plus C, and B plus C के लिए सोल्यूशन है 120. 120 में माइनस किसको करेंगे, दैट विल वी गेट हियर इज 120 प्लस A प्लस D प्लस E प्लस F प्लस एन G. तो 120 हमारे पास कितना है, 40 प्लस 30 प्लस 6, and then that is equals to 44. तो 120 minus करेंगे, that will get 44. The answer should be the 44 here. Now let's go ahead with option 55, 30, 33 and 44, and that will be option 44 will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have another question, that is a question number 57th question of the session here. The question is, the diagram given below shows the number of students who got distinctions in 3 subjects out of 500 subjects. 500 subject में उनको 3 subjects में distinctions मिली है. Study the diagram carefully and answer the questions that follows. आपको question को diagram को पढ़ना है, उसके बाद आपको according to that you have to answer here. Now we'll move ahead with the diagram here. ये आपका डायग्राम बना हुआ है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं. ओके, इसकी बात करते हैं तो फिजिक्स जो है वो 42, 12, 11 एंड 15. केमिस्ट्री जो है वो 47, 12, 11 एंड 15, 13, एंड मैथमेटिक्स की बात करते हैं 15, 50, 11 एंड 13 हियर. सो दिस विल बी द डायग्राम हियर. 12 जो है और 12 और 11 है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए
दो आपके ओपिनियन है। और अगर मैथ्स और केमिस्ट्री की बात करते हैं दैट इज 13 एंड 11, एंड अगर मैथ्स एंड फिजिक्स की 15 and 11 है। So the first question is for the session, that is what is the percentage of the students who got a distinction in two subjects. आपको बताना है कि कितनी परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनको दो सब्जेक्ट्स में distinctions मिली है. Okay, so the number of students who got distinction in the two subjects we have here is 15 plus 13 plus 12 here. 15 plus 13 plus 12 here. तो ये तीनों है, तो that we will get here is 40. अब 40 है तो 40 का परसेंटाइल निकालेंगे, तो 40 अपॉन 500 टोटल स्टूडेंट्स है 100, तो हर जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 वन 5 एंड 5 8 सा 40 है, तो कितना आया 8%। तो दो सब्जेक्ट में जिन बच्चों को डिस्टिंक्शन मिली है उनकी परसेंटेज क्या है, दैट इज 8%। मूविंग अहेड, ऑप्शन ए इज 8%, 10% एंड 12%, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, दैट इज 8% here. Now moving ahead, we have another question, and that we have your next question, that is your question number 59th question of the session here. And the question is, what is the percentage of students who got distinction? तो आपको बताना है कि अब एक या दो या तीन के बारे में नहीं बोला उन्होंने, बोला अब आप बताइए कितने परसेंट बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको डिस्टिंक्शन मिल गया है. Let's go ahead with option 36%, 38% and 42%. Number of students who got distinction, then we have a student here, that is your 50 plus 47, 50 plus 47 plus 12 plus 11 plus 13 and plus 15. इनको हम sum up करेंगे, so what will get 5 3 8 8 plus 1 9 9 plus 2 11 11 plus 7, that is 18 18 and then 19 and then 20 here. So what will get is 20 for 50 हो गया, 47 हो गया, okay, then 47 हो गया, then we have 42 also here. So okay, so we'll just add it on. 5 plus 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and then 20 का 0 कैरी, 2 कैरी यहाँ पे हो गया, 2 plus 1 3 4 then 5 and then 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, so 190. आंसर विल बी द 190. तो 190 ऐसे हैं आपके जो कि टोटल नंबर ऑफ देन हु गेट डिस्टिंक्शन है. तो इनका हम सोल्यूशन निकालेंगे, दैट मीन्स 190 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 500 मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 5 3 ज़ा 15 एंड 5 8 ज़ा 40, तो कितना हो गया 38%. तो 38% would be the answer, that the percentage of the student that who got distinction here. Option A is 36%, 38% and 42%, that is option B will be the right answer, that is 38% here. Now moving ahead, we have another question, that is your question number 60th question of the session here. The question is the percentage of student with the distinctions mark in mathematics. अब अभी तक आपको ऊपर वाले में ये बताना था कि दो सब्जेक्ट्स में जिनको डिस्टिंक्शन मिली आप उनको लिखो. इसमें था कि परसेंटेज जिनको भी डिस्टिंक्शन मिले, चाहे एक सब्जेक्ट चाहे दो सब्जेक्ट चाहे तीन सब्जेक्ट, आप उनमें लिखो. पर यहाँ पे अब एक दो नहीं, अब इन्होंने सब्जेक्ट को मेंशन कर दिया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जिनको कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जिनको डिस्टिंक्शन मिली है. So let's go ahead with the mathematics here. So the number of the student with the distinctions marks in the mathematics की distinction की अगर हम बात करते हैं तो we'll get 15 12 11 and 13 here. So we'll do that, and here we have 50 plus 13 plus 11 plus 15, तो उसको हम ऐड ऑन करेंगे, 5 plus 6 7 8 9 9 होगा, 9 यहाँ 5 plus 6 7 8 9 9 हो गया, 1 2 3 and 4 5 6 7 8 9 8, so 8 will get 89 हमें मिलेगा. 89 का परसेंटाइल निकालेंगे, so 89 अपॉन 500 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 और ये आपका 89 है, तो 89 अगर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे दैट विल गेट हियर इज 17.8%. तो हमें आंसर मिलेगा 17.8% will be the right answer, that who got the distinctions in mathematics, the percent of the students which we have. So the options we have is 16.8%, 18.9% and 17.8%, and 17.8% will be the right answer here for this question, that is option C will be the right answer here for this question. Now moving ahead, we have another question, that is your question number 61th question of the session here is. So here we have a 61th question of the session that we have to discuss, and the question
So the question we have is 61th question, and the question we have is a publishing firm publishes newspaper A, B and C. And publishing firm जो है वो publish करता है newspaper A, B, C in an effort to persuade advertisers to insert the advertisement in these newspaper. The firm sends on the following statement to be possible to the advisors. A survey of representative samples of the whole population shows that न्यूज़पेपर ए इज़ रीड बाय 28%, एंड जो न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं वो आपका 28% है। न्यूज़पेपर जो बी पढ़ते हैं वो 25% है। न्यूज़पेपर जो सी पढ़ते हैं वो अपनी 14% है। न्यूज़पेपर ए और बी जो दोनों पढ़ते हैं दैट इज़ 11%। बी और सी न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं दैट इज़ 10%। सी और ए जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं दैट इज़ 9%। और जो सिर्फ सी पढ़ते हैं वो आपके सिर्फ 0%, दैट इज 0% here. Okay, so now moving ahead is we have a following questions here, and with respect to that the question is the percent of the readers who reads all the three newspapers. आपको बताना है कितने परसेंट रीडर्स हैं जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. सो फर्स्ट वी विल draw the number of percent. First you have to understand the number of percent would be the 100 here, and according to that question here we'll draw a diagram here with respect to this, and we have a three newspapers category. This will be the paper A, this will be the paper 2, that is B, and this will be the paper 3, that is paper C. This is P, this is Q, this is R, this is S, this is T, this is U, and this is V here. Okay, so we'll see that let the number of the persons be 100 here, and we have to just find out the percentage of that readers who read all the three newspaper. So then we have with respect to this we have the newspaper here, that is अगर मैं equation बनाना चाहूँ तो let we can find it out कि P plus Q plus S plus T, P plus Q plus S plus T जो कि सिर्फ न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं वो आपके 28% है. उसके बाद सॉरी 26% है, वी हैव अ 26% है. एंड ऐसे लोग जो लोग के आपके लाइक आपके जो है Q है प्लस R है प्लस T है प्लस U है वो आपके 25% है. S प्लस T प्लस U प्लस V जो है आपके वो आपके है 14%. Q प्लस T जो है वो आपके 11% है. T प्लस U जो है वो आपके 10% है. S प्लस T जो है वो 9 है. और V जो के लिए C पढ़ते हो वो आपके दैट इज 0 है. With respect to the question here, V अगर 0 है in that case we can say that STU जो STUVP हम लोग ने बनाया equation STUVP, so U तो 0 है, V 0 है, तो STU जो है वो 14 ही के इक्वल होगा. एंड फॉर दैट से T प्लस U जो है वो 10 है, तो हम ये समझ सकते हैं S जो है वो 4 होगा विद दैट रिस्पेक्ट टू केस, कि जिसमें हमारा S इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, दैट विल बी 4 है. तो T अगर आपका 9 है तो 9 माइनस S है, दैट इज 9 माइनस 4, दैट विल बी T equals to 5. U जो है वो 10 minus T है, that is 10 minus 5, that means U is also your 5. and Q जो है 11 minus T है, तो we will find it out 11, and that is Q will be 6 here. and P जो है 26 minus 2 QST है, तो 6 plus we just do that here. P equal P जो है वो आपका वो है 26 minus Q plus S plus T, जो कि आपका 26 माइनस आपका जो आएगा 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो 15 आएगा. एंड दैट विल बी हियर इट इज विल बी 11 हियर. ओके, तो ये 11 आएगा. एंड अब फॉर द आर रिस्पेक्ट 25 माइनस Q प्लस T प्लस U, and for that sake we have your 6 plus 5 plus 5 plus that is equals to 9. तो उसके हिसाब से हमारे पास जो आंसर होगा दैट विल बी हियर इज 6, so that what we'll get as answer. Okay, so according to the question we will get the answer that will be the 6 here, and that is the option with respect to the T here. And that they had asked you here the percentage who reads the following three newspapers. So तीनों newspaper कौन है जो पढ़ता है, and that will be the 5. Okay, that is the percentage of the readers who read all the three newspaper, that is 5, that is T here, and that is option A will be the right answer, that is 5. Moving ahead, we have another question, and that the question is the percentage of readers who read A and B but not C. कौन से ऐसे percentage है जो कि न्यूज़पेपर B पढ़ते हैं but not न्यूज़पेपर C नहीं पढ़ते हैं. Options we have is option A is 7, B is 6, and C is your 5 here.
द परसेंटेज ऑफ द रीडर हु रीड्स ए एंड बी बट नॉट सी, दैट इज जो ए और बी पढ़ते हों पर सी नहीं पढ़ते हों, दैट इज़ योर क्यू। एंड क्यू की वैल्यू जो है वो हमने ऑलरेडी निकाल ली है, क्यू इज इक्वल्स टू योर 6। तो क्यू जो है वो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 6 है, तो 6 विल बी द राइट आंसर। 7, 6 and 5, that is option B will be the right answer, that is 6 here. Now moving ahead, we have another questions here, that is your question number 63 question of the session. The percentage of readers who read at least one of the three newspapers, जो तीन newspaper में से at least कोई पढ़ता, एक पेपर पढ़ता हो, for that sake we have an equation here, P plus Q plus R plus S plus T plus U plus B, and that we have a sequence here that with 11 plus 6 here, then it SR will be the 9, and then S will be the 4, plus T will be the 5, U plus be the 5, and V is 0. So we'll just do that, and we by summing on, we have 11 plus 6, 17, 17 plus 17, then we have 9 here, 17, 18, 19 and 20, and then 26, 26 plus 30, 35 and 35 plus this, that will be the 40. So the answer would be the 40 here. Option we have is 20, 30 and 40, and that option C will be the right answer, that is 40 here. Now moving ahead, we have another question, that is a question number 64. The question we have is, a number of friends decided to go on a picnic. Number of friends थे जिन्होंने decide किया कि वो picnic पे जाएंगे, and planned to spend ₹96, और उन्होंने प्लान किया कि वो 96 रुपीज़ स्पेंड करेंगे ऑन ईटेबल्स, इन ईटेबल्स पे 96 रुपीज़ स्पेंड करेंगे. 4 of them however did not turn up, as the consequences of the remaining ones had to contribute ₹4 each, etc. The number of these who had attended the picnic was, बताना है. Option A है 8, option B है 12 and option C है 16 here. And with respect to that, that let the total number of the student that has been had decided to attend the picnic would be X here. So what we'll get is your 96 upon X minus 6 minus 96 upon X, that is equals to 4. And then after solving this we'll get here 96 अगर हम cancel भी कर देते तो further we'll have 1 X minus 4, and that is minus 1 upon X, that is equals to 4 upon 96. okay, यहाँ से कॉमन लेकिन डाउनवर्ड अगर हम डाल देते तो for that case we will have X minus 4 and upon, that is x minus 4, and equals to 1 upon 24. And then after solving this in the form of the equation, that is x square minus 4x minus 96, that is equals to 0 here. And here we'll solve further, that is x minus 12 and x plus 8, and that is equals to 0 here. And all you can see that x equals to 12 here would be the answer. And the number of students who attended the picnic is your 12. टोटल नंबर ऑफ 12 स्टार्टेड थे, और ऑब्वियस सी बात है जिसमें से 4 लोगों ने बैकअप कर लिया, एंड दैट इज 12 minus 4, दैट विल बी गेट हियर इज 8. तो टोटल नंबर ऑफ जिन्होंने पिकनिक को अटेंड किया था, दैट विल बी द 8 हियर, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एज वेल. The 8 will be the right answer, that is option A is 8, 12 and 16, and option A will be the right answer, that is 8 here. According to this question, if I'm talking about so what we will have to do is first of all, आप अगर हमारा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकें. इनमें थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन था क्योंकि भाई अरिथमेटिक रीजनिंग था, तो रिलेटेड टू दैट कैलकुलेशन तो होना ज़रूरी था. दैट व्हाट वी हैड डिस्कस्ड हियर, बट बिफोर दैट विल जस्ट डू दैट कि रीजनिंग जो है हमारे पास वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग. वर्बल रीजनिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक सेक्शन ए है जो कि जनरल मेंटल एबिलिटी में है, और तो सेक्शन सेकेंड जो सेक्शन है वो आपका दैट इज लॉजिकल रीजनिंग है. जनरल मेंटल एबिलिटी जो है वो आपका एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, सीरीज कॉम्पिटिशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, डायरेक्शन सेल्स टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेट टेस्ट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स. एंड आज हमने 14th टॉपिक जो कि आपका अरिथमेटिकल रीजनिंग है वो भी कंप्लीट कर लिया है. फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द 15th टॉपिक, दैट इज इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, data sufficiency, decision making, assertions and reactions test, situation reaction test, and verification of the truth of the statement.
इसको कंप्लीट करके फिर हम जनरल मेंटल एबिलिटी जो वर्बल रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट है हम उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। देन विल स्टार्ट विद सेक्शन 2 दैट इज लॉजिक रीजनिंग। लॉजिक रीजनिंग में लॉजिक, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट assumptions, statement course of action, statement conclusion, deriving the conclusion from the passages, theme detection, question statement, miscellaneous logical puzzle, वो हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट कंप्लीटिंग देन वी विल डिस्कस नॉन वर्बल रीजनिंग जिसमें सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, mirror image, water image, embedded figures, completions of incomplete patterns, figures metric, paper folding, paper cutting, rule detection, grouping of identical figures, cubes and dice, dot situations, constructions of squares and triangles, figures formation and analysis, and practice question paper. Then we will discuss that also. Okay, so first of all अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सेकेंडली अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा भी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।